I would like to take this privilege and honor to call upon Dr. Girdhar Gyani, sir, to please come on dais and share his thoughts. Thank you, sir. नमस्कार. पहले तो मैं just I will speak very briefly. We want to be not late more than half an hour. उसके लिए 12:30 हमें close करना है inauguration. When I came here, I spoke to Dr. Rakesh that thanks that you have been organizing such a wonderful event every year, and why you should do it, because the big institutions have got the facility like this. They have got inner experts available, and you can invite few from outside. That's why I thanked him. But like a true leader, he immediately said, "No, not me. It is Bobby who has been doing it." तो ये एक empowerment है यहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ because I am in this field now. I don't know how many years. That Sarvodaya now is becoming brand. It is already a brand, you know, the kind of hard work. लेकिन मैं अशोक को कहा, गहलोत कहा भाई, जब राकेश गुप्ता जी बिजी थे बिल्डिंग द हॉस्पिटल, लेट मी टेल यू, गहलोत वाज द फ्रंट फेस. मैं आपको बता रहा हूँ, आई मीन वी ऑलरेडी न्यू सर्वोदया बिकॉज ऑफ गहलोत. So I think you have done remarkable work to reach at this level. Now coming to, क्योंकि बॉबी ने मुझे yesterday वाराणसी में कहा कि साहब एक वैकेंसी है चीफ गेस्ट की, क्योंकि मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे हैं. Anyway, तो आपको वो वैकेंसी फिल करनी है. Anyway, मिनिस्टर से कंपेयर मेरे को मत करना भाई आगे से. Anyway, मैं आपको just I'll take 5 minutes. You see, my role nowadays is more of attending meetings after meetings with the government. And every year, every meeting आजकल बात एक ही होती है कि 2047 में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम विकसित भारत बने और तब तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो जानी चाहिए. I mean, everybody is reminded on that. When we went to IRDA, new chief has taken over. He also said the same thing. By 2047, we want each of the citizens should have some kind of insurance. So I mean, everybody is hooked on to 2047. But when you look back at 1947 and today, after 75 years of independence, now 76, so few things come, you know, very clearly. अगर आप देखें today, the 2022 data, which is with us, you know, it says that 2.1 million beds are available. 1.3 I think गवर्नमेंट में है and 0.9 जो है वो गवर्नमेंट में है. तो प्राइवेट में अभी भी ज़्यादा बेड है हमारे पास. तो 2.1 मिलियन. Now if we have to become विकसित भारत, that means you have to meet WHO norm. Now WHO norm ये है कि 3 बेड्स कम से कम आपके पास चाहिए per 1000 population. So you know, नीति आयोग आजकल यही सोचता रहते हैं वहाँ पर that how do we make 4 million, because to make 3 beds per 1000 population, you need 4 million beds. That means almost doubling the number of beds. We wanted the data of 1947, कितने beds थे. Unfortunately, none of us, including government, could have this data. Broadly ये कहा गया कि 1 लाख से कम थे उस समय. ये भी कह रहे हैं कि हायर साइड था, मतलब बेड्स सिर्फ हमारे पास इतने थे. The reason was that healthcare was delivered only by the RMPs, general physician. Hospital तो आपको नजर नहीं आएंगे, because healthcare was around the general physician. और आपने जैसे ये बता रहे थे आपको, तो I remember my own father, you know. So we were, I think that time in 7th or 8th standard. तो मेरी एल्डेस्ट मैरिज सिस्टर की मैरिज होने वाली थी, तो मेरे को कार्ड दिया फादर ने. सिंपल एक कार्ड होता था, एक छोटा सा, कि डॉक्टर चावला को देखे आओ पहले. तो वो डॉक्टर चावला आरएमपी थे, और वो जनरल फिजिशियन, आगरा की बात कर रहा हूँ मैं. वो यानी पहला मैरिज कार्ड उसको दिया जाता था, जनरल फिजिशियन को. आजकल हम खट गणेश जी को देते हैं वैसे, लेकिन उस समय जनरल फिजिशियन दिया. तो दैट यूज्ड टू बी द ट्रस्ट फैक्टर. दूसरा क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट जीरो हुआ करती थी फ्रॉम दी हेल्थ केयर सिस्टम. आई एम टॉकिंग ऑफ 47 to let's say even up to 1960. एक्सपेक्टेशन वाज वेरी मिनिमल. अगर कोई आदमी ठीक नहीं होता है तो इट इज आवर ओन फेट.
दैट्स ऑल। तो वो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसमें। अफोर्डेबिलिटी की बात ही नहीं थी। I mean, you understand there was hardly any cost because of the simple reason technology थी नहीं वहाँ। There was hardly any technology, simple biochemistry हुआ करती थी, इसी से टेस्ट होते थे, that's all। अब क्या फर्क पड़ गया? Because your topic is patient experience। अभी आप देखिए कि कितना एडवांसमेंट हो गया है। 1947 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 34 to 37 ईयर। ये डेटा में थोड़ा वेरिएशन है, somebody says 34, somebody says 37। आज है more than 73। Now how it has happened? It has simply happened because of the advancement in the healthcare system। We have got doctors, we have got specialists, we have got technology, you can name the technology we have available of them। Now with that, the trust factor should have enhanced, it should have gone up। लेकिन sorry, वो ट्रस्ट फैक्टर इस समय बड़ा डगमगा रहा है हमारा। यू नो द पेशेंट ट्रस्ट फैक्टर, आई थिंक वी हैव टू डू समथिंग ऑन द परसेप्शन दैट हेल्थ केयर इज एक्सपेंसिव एंड आल्सो कमर्शलाइज्ड। एक्सपेंसिव होने में कोई बुराई नहीं है अगर ये परसेप्शन हो जाए, तो वी कैन रियली टेल देम द एक्सपेंसिव मीन द रियल कॉस्ट इज सो एंड सो। बट व्हेन दे स्टार्ट हैविंग परसेप्शन दैट इट इज बीइंग कमर्शलाइज्ड, that actually brings a factor of concern for all of us sitting here। We have to address that। Insurance की जो बात आ रही है, that now government has told us as a AHPI that please promote that more, and because 14% population as per the government has the private insurance, 14%। They also say that around 60% population is getting covered through Ayushman Bharat, CGHS, ECS, ESI। 60% का डेटा है उनके पास, which has got this। But unfortunately क्या हो रहा है कि all the 40% which they claim to be covered under Ayushman Bharat is not getting the advantage, not getting the benefit। They are not getting a hospital who can admit them under that scheme। So actually it remains on the paper। So that actually we are telling them right every day, every time, that unless they do something, this 40% will only be on the paper। So we have to now work। Now one of the senior functionary in the Ministry of Health is telling us that in spite of Ayushman Bharat, please promote private insurance because Ayushman Bharat 5 lakh से कुछ नहीं होने वाला है। I mean they themselves are saying that। तो बात यही हो रही है कि इस समय हेल्थ केयर हैज द कॉस्ट। नाउ इफ यू टॉक टू पर्सन हुज सैलरी लेट अस से 50,000, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ पर्सन 50,000 रुपीज, ही विल स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी 6-7,000 रुपीज पर चाइल्ड ऑन एजुकेशन। ही वांट्स बेस्ट ऑफ द एजुकेशन फॉर दिस चिल्ड्रन, लेकिन बाकी रोटी कपड़ा मकान में तो खर्चा चाहिए। When you talk to him about the health care, he says, अब health care में क्या जरूरत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। So I think that is the biggest area of the concern for all of us, for society, for government, for NGOs, to make them understand that health care also should be your equal necessity like you are spending money on the education of your children। उसी से क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है, जो हम खर्चा यहाँ पे जो बिल आता है, आई कीप रिमाइंडिंग, आई थिंक मे बी लास्ट ईयर मैं आया था शायद रेडिक्ट्री में, मैंने ये आपको स्टडी बताई थी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने जब ये काम हमें दिया था तो उनकी जनरल बेड की कॉस्ट निकाली थी हमने 3 हॉस्पिटल का डेटा लेके, और हमने बताया कि जनरल वार्ड में गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 7,500 ऑन ईच पेशेंट आया नहीं आया ऑन ईच बेड जनरल वार्ड। और उनका जो आईसीयू का बेड का जीबी पंत का उस समय डेटा हमें मिला था, वो करीब 12 से 15,000 आ रहा था। आई एम टॉकिंग ऑफ आज से 6 साल पहले की बात। आई मीन दिस वी टोल्ड गवर्नमेंट दैट आगे से यू स्टार्ट बिलिंग द पेशेंट। 7.5 3 डेज रहा वो आपके, तो 22,500 बिल बनाओ, सब्सिडी 22,500, अमाउंट जीरो। एटलीस्ट द पेशेंट विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट इतना खर्चा होता है। जब वो सर्वोदया में आएगा, सर्वोदया में मान लीजिए 12,000 भी बिल लगाया आपने जनरल वार्ड का पर डे, आई एम जस्ट सेइंग ही विल नॉट माइंड।
नहीं नहीं 12,000 में ये माहौल में ये पर्सनलाइज, ये नर्स, वो अटेंडेंट, सब कुछ है हमारे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है इस समय कि पीपल डू नॉट नो दैट हेल्थ केयर डज कॉस्ट, इट इज नॉट फ्री। So these are the areas which we have to work to improve upon the patient experience. और मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे स्टडी होने वाला है। So I think anyway मेरा as a chief guest I am supposed to speak only 5-6 minutes. So anyway I will have some other time to speak. But again thank you very much for this lovely gathering and lovely questions. Thank you so much, sir. It's always a pleasure to hear you out. And may I request Dr. Rakesh Gupta to please come on stage and felicitate our chief guest. Sir has been instrumental in starting the quality journey of our country. He was the one who established NABH and made it popular. And I think